स्कूल से हम आए हैं। सो प्रेजेंटली हमारा ट्रिप था आज, ऑर्गेनाइज किया था हमने होली मिशन सेकेंडरी स्कूल में। तो अभी गाड़ी हमने पार्क किया है बाबा ऋषि में। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम है आगे गुलमर्ग तक एज ट्रैकिंग, पैदल चलना। तो बच्चों को आप देख सकते हो पूरे जोश में, पता नहीं कितने गिरेंगे अभी वो भी पता चलेगा, लेकिन थोड़ा जोश में लग रहे हैं। एक्साइटेड सी जोर से एक्साइटेड सी कहाँ तक पहुंचेंगे? क्या बात, एक्सीलेंट। सो देखते हैं कितनी एनर्जी रहेगी। होपफुली अभी आधे घंटे, इंशाल्लाह आधा घंटा लगेगा तो वो भी एट गुलमर्ग। सो आज हमारे प्रोग्राम था, पूरा स्टाफ है फ्रॉम क्लास 4 से हमने किया अब 10th क्लास। इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो विजिट था हमारा आज, बच्चों को ऑन फील्ड एक्सपीरियंस देगा। सो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, खास करके छोटे बच्चे हैं कर रहे हैं। छोटे बच्चे बहुत ही यंग एनर्जेटिक फास्ट भाग रहे हैं। आगे अल्लाह से कमेंट करेंगे। जो छोटे बच्चे बहुत ही लीड कर रहे हैं उनको बुलाएं आज कम्पेयर टू 10th 9th। उनके पास बहुत एनर्जी है। ये बोल रहे सर हम दौड़ के वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने उनको रोक के रखा है।
And also there are some wild animals. Just not wild animals. There are some monkeys and other animals available here. And you can check again here beauty of Kashmir. You can look all around why Kashmir is so popular around the world. That's why it's called a Hill Valley, because of its surrounding areas. It's famous for its snow-capped mountains and other places. Here are actually four seasons: spring, summer, autumn, and Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me this journey. Yeah, आज शनिचरवार हम गुलमर्ग के इस कुदरती मनाजिर को देखने के लिए आए हैं, जिसे कश्मीरी में कश्मीर की जन्नत कहा जाता है।